एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर्टी क्या होती है। उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझेंगे कि पावर्टी क्या होती है, पावर्टी किसे कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, पावर्टी क्या होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। पावर्टी इज ए स्टेट और अ कंडीशंस इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब कि पावर्टी हम उसे कहते हैं कि जो पर्सन अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम पावर्टी पुअर कहते हैं। ठीक है, पावर्टी कहते हैं। And essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from the employment is so low that the basic human need cannot be met. ठीक है। According to World Bank, poverty is pronounced deprivations in a well-being and comprise many dimensions. It includes a low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival dignity. Poverty also encompasses low level of health, education, poor access to clean water, sanitation, inadequate physical securities, lack of voice, insufficient capacity, and opportunity to better one's life. ठीक है, जिनके पास एजुकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्लीन वाटर्स नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको हम पुअर कहेंगे। ठीक है। In India, 21.9% of the populations live below the poverty line in 2011. In 2018, almost 8% of the world workers and their family live on less than $1.90 per person per day on international poverty line. अब हम कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं पावर्टी के। दो टाइप्स होते हैं पावर्टी के, एक एब्सोल्यूट पावर्टी होती है, एक रिलेटिव पावर्टी होती है। एब्सोल्यूट पावर्टी वो होता है जो कि अपने मिनिमम नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जैसे फूड, शेल्टर्स, हाउसिंग। ठीक है, अ कंडीशंस वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन अ बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, फूड, शेल्टर, हाउसिंग. दिस कंडीशन मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन अ डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम. It was first introduced in 1990. The dollar a day poverty line measured absolute poverty by the standard of the world's poorest country. In October 2015, the World Bank reset it is a 1.90 a day day. Relative poverty क्या होता है? जब हम इनकम को कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री से। ठीक है, वन इंडिविजुअल्स की इनकम दूसरे से हम कंपेयर कर रहे हैं। It is defined from the social perspective, that is living standard compared to the economic standard of population living in surrounding. Hence, it is a measure of income inequality. Usually, relative poverty is measured as a percent of the populations with income less than some fixed proportions of median income. Poverty के कुछ estimates होते हैं. Poverty estimation in India is carried out by the Niti Aayog task force through the calculation of poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation (MOSPI). Poverty line estimation in India is based on the consumption expenditures and not on the income level. Poverty is measured based on the Consumer Expenditure Survey and National Sample Survey Organization. A poor household defined as one with an expenditure level below a specific poverty line. The incidence of poverty is measured by the poverty ratio, which is a ratio of the number of poor to the total population expressed as percent. It is also known as head count ratio. अलग कमेटी आपके 1979 में आई थी जो कि पावर्टी से रिलेटेड होती है. डिटरमाइन द पावर्टी लाइन बेस्ड ऑन अ मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 and 2100 कैलोरीज फॉर एन एडल्ट इन रूरल एंड अर्बन एरिया रिस्पेक्टिवली. ठीक, सब्सिक्वेंटली डिफरेंट कमेटी लाइक लखड़वाड़ा कमेटी 1993 में आई थी, तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई थी, रंगाराजन कमेटी 2012 में आई थी एंड डिड द पावर्टी एस्टिमेशन. As per the Rangarajan Committee Report 2014, the poverty line is estimated as a monthly per capita expenditure of ₹1407 in urban areas and ₹972 in rural areas. तो ये आपकी जो पावर्टी की कुछ कमिटीज़ है, जैसे अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए भी इस कमेटी को याद कर सकते हैं.
अब कॉजेस ऑफ पावर्टी की हम बात करते हैं। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सपोजर। पॉपुलेशन एक्सपोजर बहुत बड़ा रीज़न होता है पावर्टी का, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन हैज स्टेडली इंक्रीज थ्रू द ईयर एंड ड्यूरिंग द पास्ट 45 years it has rise at the rate of 2.2% per year, which means on average about 17 million people are added to the country's population each year. And this also increase the demand for the consumption of good tremendously. जब population बढ़ेगी तो गुड्स भी ज़रूरत पड़ेगा, लोगों को फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी शॉर्टेज होगी, तो इस वजह से भी लोग मरेंगे और डेथ डिक्रीज होगी बट बहुत बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और पावर्टी एनालिसिस होगी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अ मेजर रीजन फॉर द पावर्टी इन द लो प्रोडक्टिविटी इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर. The reason for low productivity is manifold. Chiefly, it is because of fragmented and subdivided landholding, lack of capital, illiteracy about new technology in farming. Illiteracy है, टेक्नोलॉजीज़ की अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। एंड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन वेस्टेज ड्यूरिंग द स्टोरेज एक्सेट्रा। उनको यूज़ नहीं आता है ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करने का, ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ पावर्टी होता है। Inefficient resource utilization. There is underemployment and disguised unemployment in the country, particularly in the farming sector. Disguised unemployment होता है particular farming sector पे, and this has resulted in a low agricultural output and also led to a dip in a standard of living. Low rate of economic development. Economic development has been low in India, especially in the first 40 years of independence before the LPG reforms in India. Price rise. Price rise has been steady in the country and this is added to the burden of the poor carry. Although a few people have benefited from this and low income group have suffered because of it and not even be able to satisfy their basic minimum wants. फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा रीज़न होता है पावर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर फैक्टर कॉजिंग अ पावर्टी इन इंडिया. द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द हायर नंबर ऑफ जॉब सीकर. However, there is not enough expansions and opportunity to match this demand for jobs. Lack of capital entrepreneurship. The shortage of the capital and entrepreneurship result in a low level of investment and job creations in the economy. Social factor. Apart from the economic factor, there are also a social factor handling the eradications of poverty in India. Some of the handles in this regard are the law of inheritance, caste system, certain traditions, etc. Colonial exploitations. The British colonizations and ruled over India for about 2 centuries, deindustrialized India by running its traditional handicraft and textile industry. Colonial policy transformed India as a mere raw material producers for European industries. Climatic factor. Most of the India's poor belong to the state of Bihar, UP, MP, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, etc. Natural calamities such as frequent flood, disaster, earthquake, cyclone cause heavy damage to agriculture in the state. पावर्टी ट्रैप क्या होती है? देखिए, पावर्टी ट्रैप लो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो लो इनकम होगी, लो इनकम होगा तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो ग्रोथ होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक। फिर लो इनकम है तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, फिर उसके बाद लो ह्यूमन कैपिटल है, लो प्रोडक्टिविटी है। तो इनकम के बेस पे होता है, इनकम लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, लोग सेव कम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी लो है, एजुकेशन स्किल्स भी लो है, तो ये पावर्टी ट्रैप है। ठीक, कुछ पावर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने दिया है पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP. It was introduced in 1978 to 1979 and universalized from 2nd October 1980, aim at providing assistance to the rural poor in the form of subsidy and bank credit for productive employment opportunities through successive plan period. फिर जवाहर रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आया. Was meant to generate a meaningful employment opportunities for the unemployed and underemployed in rural areas through the creation of economic infrastructure and community and social asset. फिर रूरल हाउसिंग प्रोग्राम इंदिरा आवास योजना भी आया पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. द इंदिरा आवास योजना प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग अ फ्री हाउसिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन families in rural areas and main target would be the household of SC and ST. तो इसका मेन टारगेट होता है हाउस प्रोवाइड करना SC ST को और प्रोवाइड फ्री हाउस टू द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल.
फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया, इट एम एट एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू द वेज एम्प्लॉयमेंट. Food grain are supplied to state free of cost. However, the supply of food grain from Food Corporation of India (FCI) go down has been slow. फिर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी आया. दिस पेंशन इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द जॉब ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज गिवन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. ठीक. फिर अन्नपूर्णा स्कीम आई was launched by the government in 1999 to 2000 to provide food to senior citizens and who cannot take care of themselves and not under the National Old Age Pension Scheme. ठीक. फूड प्रोवाइड करना जो कि पीपल जो कंसिडर नहीं किए गए हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर एंड हु हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ देम इन देयर विलेज. This scheme was provide 10 kg free food grain to a month of eligible senior citizen and they are mostly target group of poorest of the country Indian senior citizen. फिर संपूर्ण ग्रामीण योजना मेन ऑब्जेक्टिव दिस स्कीम इज टू कंटिन्यू जनरेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ड्यूरेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया एंड प्रोविजन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर द पुअर. फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी लॉन्च हुआ पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए. तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.